Second part, this asana prevents the hypertension. First is the Tadasana. Through the Tadasana prevents the hypertension. First, discuss the procedure of Tadasana. Stand up in the attention position. Lift your arms upward. Stretch your hands upward. Raise your heel and come on your toes. Also, pull up your body upward. After some time, breathe out slowly and come to the previous position. Repeat the same exercise 10 or 15 times. Like this is the Tada Asana. Benefits: it helpful in the developing physical and mental balance. It reduce the obesity. It cure the constipation. It cure digestive problems. It improve body posture. It elevates the sciatica. It is the beneficial in treating hypertension. Contradiction: if you have low blood pressure, you should not do this asana. In case of headache or insomnia, you should avoid doing this asana. Individuals who suffer from blood circulation problems such as not perform this asana. It means जिसमें कोई रक्तचाप होने पर आसन ना करें. मीन्स आपको अगर लो ब्लड प्रेशर है तो इस आसन को नहीं करना चाहिए. आपको अगर सिर दर्द, नींद ना आने की बीमारी होने पर इस आसन को ना करें. यदि किसी व्यक्ति को रक्त प्रवाह संबंधी कोई समस्या हो तो इस आसन को ना करें. या आपके नेक में अगर बहुत ज़्यादा जो आपका एंकल है, अगर यहाँ आपको एंकल में अगर आपके पास प्रॉब्लम है तो आप इस आसन को ना करें. नेक्स्ट है वज्र आसना. वज्र आसना, it is meditative asanas. Knee down on the ground or floor with your knees, ankle and toe touching the ground. Your toes should be stretched backward. Now place your palm of your hands on the knee. The upper body should be straight. At this time, the breathing should be deep, even and slow. Then expand your chest forward and pull your abdominal portion inward like this. और एक ऐसा आसन ये है जो खाने के बाद किया जा सकता है. आफ्टर द ईटिंग इस आसन को तुरंत आप कर सकते हैं और कोई भी आसन खाने के बाद नहीं करना है. बेनिफिट्स: इट इज़ हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग concentration. It is helpful in curing dysentery. It enhances memory power. It alleviates the problems related to menstruation. It removes mental stress. It strengthens the pelvic muscles. It cures postural defects. It prevents hernia and help to relieve piles. It is the best asana for people suffering from sciatica and many more problems. It helps in reducing this hip fat, etc., etc. But main work is the control the high blood pressure or hypertension. कंट्राडिक्शन में जो व्यक्ति जोड़ों के दर्द से ग्रस्त हो उन्हें वज्रासन नहीं करना चाहिए. इट मीन्स कि इस नीज में, यहाँ नीज में, एंकल में या थाइज में कोई अगर आपको सीवियर इंजरी हुई हो या बोन ब्रेकेजेस हो, फ्रैक्चर बोल सकते हैं, अगर है तो इस आसन को नहीं करना चाहिए. देन अगर जिन व्यक्तियों में किसी तरह की स्पाइनल कॉलम की प्रॉब्लम्स हो उन्हें वज्रासन नहीं करना चाहिए. जिन व्यक्तियों को चलने फिरने में कुछ कठिनाइयाँ उन्हें वज्रासन का अभ्यास पूरी सावधानी रखते हुए करना चाहिए. पवन मुक्ता आसन, इस आसन को हम लोग डायबिटीज़ जब पढ़ रहे थे उस टाइम ड्यूरेशन में इसको हमने डिस्कस किया है. देन नेक्स्ट द अर्ध चक्र आसना. प्रोसीजर: स्टैंड स्ट्रेट विथ बोथ फीट टुगेदर. होल्ड योर हिप with your hands. Bend backward without bending your knee. With slow inhalation
Remain in this pose for sometimes do it 2 or 3 times. Like this is the Ardha Chakra Asana. Like this, Ardha Chakra Asana. Benefits is help to mix ankle, thigh, shoulder, chest, spine and abdomen stronger. It relieves stress and tension. It improves the digestion. It cure menstrual disorder. It cure pain in leg. It reduces fat in the waist and thigh side. It helps to alleviate upper back pain. It relieves stress in the neck and shoulders. It prevents the hypertension. Contradictions. Avoid performing this asana if you have migraine, headache, lower back pain, insomnia, etc. Avoid doing this asana if you have peptic ulcer and hernia. Avoid this asana in case of hip or spinal problems. Pregnant women should doing this asana. भुजंगासना, जब हम डायबिटीज़ पढ़ रहे थे उस टाइम लेसन में भुजंगासन क्या किया गया हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है. लाइक दिस भुजंगासना. एंड लास्ट इज द शवा आसना. Savasana is the prevents the hypertension. Procedure: lie down on spine position. Legs should be straight. Keep the arms away from the body. Leaves all the limbs loose as well as relaxed. Gradually breathe in deeply. Close your eyes and think that your whole body is becoming loose. Feel a complete relaxation in your body. Remain in this position for 10 to 12 minutes. Like this is the Savasana. Benefits: it strengthens the nerve system, it controls high blood pressure, it relieves mental tension, it regulates blood circulation and gives relief in various aches and pains. It cures many psychosomatic problems. It helps to cure many cardiac problems. It relaxes and calms the complete body. It improves concentration and memory. It increases energy level. The body relaxes and goes into a deep meditative state, which in turn repairs the cells and tissue and relieves stress. The main work prevents the hypertension and then prevents the hypertension. Thank you, student.